From Mentor English, myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Professor MA Raza. Today, in short literary terms, our topic is diction. In Urdu or Hindi, you can justify bندشءالفاظ. Diction means the choice of words to enhance the poetical effect. Diction means the choice of words to enhance the poetical effects. While reading the poetry, the arrangement of words has magical power to motivate the readers for a good and a bad action. For example, nor can you judge woman's thoughts by tears, than by her shadow what she wears. If we translate into plain English, it will lose its diction charm. Translation: we cannot judge the tears of a woman when she weeps, as well as we cannot tell, or as we can't tell looking at the shadow of jewelry what is this. No charm in the translation, it is called diction. No charm in the translation, it is called diction. Now let me discuss in Urdu and Hindi. इसका मतलब ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना है जो पढ़ने वालों की दिलचस्पी को बरकरार रखे और उसके जज्बात को उभारे और उनको अच्छे या बुरे काम की तरफ माइल करे। मिसाल के तौर पर जिस शाख से मुयस्सर ना हो दहकां को रोज़ी, अल्लामा इकबाल का शेर है, और ये एग्जैक्ट डिक्शन की जो है ना वो बयान और बंदिश-ए-अल्फाज को जो है वो बयान कर रहा है। जिस शाख से मुयस्सर ना हो दहकां को रोज़ी, उस शाख के हर खोशाए गंदम को जला दो। काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। और सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। और एक आध मिसरे का मैं जो है ना वो आगे पीछे कर गया हूँ। तो बरकैफ़ी अल्लामा इकबाल की जो है ना वो नहायत ख़ूबसूरत जो है ना वो दहकां को नसीहत और जो है वो किसान की नसीहत कह लीजिए। और इसके अंदर आप अगर गौर करें तो अच्छे या बुरे काम की तरफ माइल डायरेक्टली जो है वो किया जा रहा है। तो ये डिक्शन की जो है वो उर्दू और हिंदी में पहचान है। तो इजाज़त दीजिए, नए शॉर्ट व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप उर्दू और हिंदी जो है वो अदब या लिटरेचर को जो है वो सर्च कर रहे हैं तो हमारा चैनल मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर MA रज़ा सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। उम्मीद है आपने ये चैनल भी सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिया होगा। और इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।